जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ज़ारा अरशद, क्या हाल है आपके? ठीक है? जी ठीक। अच्छा, एक तो पहला तो सवाल आपसे यही है कि आपने कब मूव किया पाकिस्तान से और ये कब की मैं बात? मूव हुई थी 2001 में। ठीक है, और मैं मूव हुई थी अमेरिका। ठीक है। एंड देन कनाडा में मूव हुई शादी के बाद 2015। ठीक है। तो काफ़ी लंबा अरसा है आपका एक्सपोज़र जो है अमेरिका का। एक्चुअली मैंने मैं 2 दिन पहले ये सोची थी कि पूरे 20 साल मुझे अब हो चुके हैं। मैं 11 साल की थी जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा था, 20 साल से अब मैं यहाँ रह रही हूँ। अच्छा, ज़ारा ये बताइए कि जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है या फैमिली स्ट्रक्चर है, उसको कैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान में और यहाँ पे कनाडा में या अमेरिका में? हाउ इट इज़ डिफरेंट एंड हाउ इट इज़ सिमिलैरिटी? फैमिली स्ट्रक्चर मतलब हमारे पाकिस्तानियों का या जैसे गोरों का भी? उनका भी, हाँ, उनका भी। एक एक हाँ। एक तो ये है कि उनका भी और दूसरा ये है कि हमारा अपना फैमिली स्ट्रक्चर जब उठा के हम उस कॉन्टेक्स्ट में हम्म। प्लेस करते हैं, तो हमें क्या उसमें क्या डिफरेंसेस महसूस? बड़ा तो एक ऑब्वियस डिफरेंस तो यही होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो माँ बाप और बच्चे एक साथ रहते हैं। ठीक है। नानी नाना दादी दादा, अम, उनकी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती जिस तरह के हम पाकिस्तान में देखते हैं। हुँ, तो एक तो ऑब्वियस स्ट्रक्चर में तो वही फ़र्क आ जाता है। आई थिंक तरबियत वगैरह भी, आई थिंक ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, सबकी बच्चों को रेज़ करने में। ठीक यहाँ है। पे आई थिंक ज़्यादातर इट इज़ द मदर्स एंड द फादर्स हु आर इन्वॉल्व्ड हुँ, इन द किड्स। हाँ, आई थिंक मैं यहाँ पे अगर मैं यही सबसे ज़्यादा एक ऑब्वियस डिफरेंस लगता है कि नानी नाना दादी दादा कम इन्वॉल्वमेंट होती है। ये नहीं कि नहीं होती, होती है, हुँ, लेकिन हुँ, नॉट द जिस तरह से पाकिस्तान में आप देखते हैं कि ठीक, ज़्यादा इन्वॉल्व होते ठीक। हैं। आई थिंक दैट वुड बी द मेन डिफरेंस। ओरिएंटेशन का फ़र्क है कोई? मतलब ओरिएंटेशन मीन्स के द वे यू डील विद किड्स हियर इन पाकिस्तान एंड इन। फर्क पड़ता है। एंड आई थिंक थोड़ा सा इट ऑल्सो डिपेंड्स आप किससे बात कर रहे हैं, राइट? सो मैं यहाँ की पली बड़ी हूँ, मुझ में पाकिस्तानी वैल्यूज भी हैं, और क्योंकि मैं 11 साल की उम्र में आई थी और अम्मी ने मुझे जिस तरह से यहाँ पे बड़ा किया है, शी वेरी मच इंस्टिल्ड द वैल्यूज इन मी। हुँ, लेकिन हुँ, फिर मुझमें वेस्टर्न वैल्यूज भी बहुत आई हैं। साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, यहीं पे मैं स्कूल गई हूँ, मेरे ठीक है, फ्रेंड्स भी यहीं के पले बड़े हैं। ठीक, हालांकि देसी फ्रेंड्स है सारे, इंडियन पाकिस्तानी मिडल ईस्टर्न तरह के है। ठीक है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ एटलीस्ट माय वे ऑफ रेजिंग किड्स एंड माय जनरेशन, हुँ, जो हुँ, पाकिस्तानी, जो मेरी जनरेशन यहाँ के लोग हैं, हम लोग आई थिंक काफ़ी वेस्टर्न वैल्यूज़ को भी लेके बड़ा करें अपने बच्चों को। हुँ, लेकिन जो जैसे मेरी बहन है जो यहाँ पे मूव हुई थी व्हेन शी वाज 20-21 साल की थी, शादी के बाद यहाँ पे मूव हुई थी, एंड शी मूव मेनी इयर्स अगो। वो बिल्कुल ही जैसे कोशिश करी थी अपने बच्चों को बिल्कुल ही पाकिस्तानी स्टाइल से बड़ा करने की, और आज तक भी आई सी दैट, एंड आई ऑलमोस्ट सी हुँ, दैट एज अ कॉज ऑफ टेंशन कि आप इतने वेस्टर्नाइज बच्चों को बिल्कुल पाकिस्तानी तरह से बड़ा करें, देयर इज दैट टेंशन देयर। So I think हुँ, that's something we all will have to deal with. But I'm already, raising my kids with a more Western style. More, हुँ, आप हर चीज का जवाब बस हाँ या ना नहीं होगा। आपको एक बात करनी है, एक समझाना है। इट्स नॉट हाई। एक्चुअली फैमिली स्ट्रक्चर में ये भी फर्क है, पाकिस्तान में देयर इज अ लॉट ऑफ हायरार्की। हुँ, माँ हुँ, बाप, एल्डर्स, बुजुर्ग जो के बस आपने हुँ, उनकी बात सुननी है। ठीक, यहाँ पे इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। इट्स नॉट कि बस माँ बाप ने कह दिया तो बस बात सुननी है। यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है, अपना दिमाग इस्तेमाल करने की, एक वो इनकरेज किया जाता है कि अपना ठीक है। इस्तेमाल करो, सवाल करो। दीज थिंग्स आर इनकरेज इन द वेस्टर्न सोसाइटी। तो अब मेरी ठीक। बहन तो ये नहीं इनकरेज करती अपने बच्चों में, लेकिन मैं करती हूँ। आई डोंट जस्ट हुँ, से यस और नो। मैं बात हुँ, करती हूँ। अगर मेरा बच्चा कोई जिद करे तो नॉट कि बस नहीं मैंने कह दिया है, हम आओ मेरी बात सुनो। अच्छा, आपको क्यों चाहिए, आप क्यों नहीं बात सुन रहे हो, एंड देन वी हैव अ कॉन्वर्जेशन अराउंड इट। एंड दीज आर थिंग्स आई थिंक आर मोर वेस्टर्न दैट आई हैव टेकन ऑन एज अपोज टू ईस्टर्न। ज़ारा, आपके बच्चों में और आपकी बहन के बच्चों में फिर क्या, जब जैसे-जैसे वो बड़े हो रहे हैं, तो क्या डिफरेंस फ़ील होता है आपको? मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, 4 साल का बेटा है और 1.5 साल की बेटी है। और मेरी बहन के बच्चे, मेरा सबसे बड़ा भांजा, आई थिंक ही माशाल्लाह इज 22 नाउ, और बीच वाला 20 का है, और बेटी 14 इयर्स की है। तो आई थिंक आई
अगर मैं कुछ नोटिस करती हूँ तो मैं ज्यादा तो नहीं कह सकती, वो तो टीन और अडल्ट ईयर्स में पहुंच गए बच्चे, पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे टीन्स और अडल्ट्स में, बट इफ आई डू नोटिस समथिंग, आई डू नोटिस there's a tension between, ये नहीं कि वो बुरे बच्चे and they're rebelling against or anything, but there's a tension कि mama just tells us to do things or she doesn't understand what we're saying, you know, because का बहुत ही देसी तरीका है अपने बच्चों को बड़ा करने का, वेरी लाइक यू नो, एंड उसके सब वो यहाँ आए भी तो जैसे आप शुरू में कह रहे थे ना कि जब हम एक कल्चर में मूव होते हैं हम उस कल्चर के अंदर भी फिर मिक्स होते हैं. When she moved here, she made all her friends, वो उस जमाने में जो सारी लड़कियां पाकिस्तान से मूव हुई थी वो सब 20 साल की मूव हुई थी, and they all became friends with each other. तो समझो कोई 100-200 पाकिस्तानियां 40-year-old you know women who moved from Pakistan at the age of 20, they all became friends, they all remain friends, और सबके एक ही तरीके हैं. Though my sister, I don't find is assimilated into the American culture the way I am. That's where I notice the difference. और मैं कहती हूँ क्योंकि you know this is things I have to remember and be conscious of. As I am raising my kids here, and I think मुझे ज़्यादा conscious होने की ज़रूरत है नहीं because मैं हूँ assimilated काफ़ी, मुझ में है Western values, so it comes naturally to me. Whereas it doesn't come naturally to her. उसको अच्छा, नहीं ये ज़ारा, एक तो आपने बता दी कि आप नेगोशिएट करते हैं ना, दिस इज वेस्टर्न वैल्यू, और हम हायरार्की पे पाकिस्तानी जो स्टाइल है हायरार्की को ज़्यादा इन्वोक करने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा 2-3 और अगर आप पॉइंट आउट करें कि वेस्टर्न वैल्यूज जब आप कहते हैं तो इससे क्या मुराद है, और जब पाकिस्तानी स्टाइल या वैल्यूज कहते हैं तो उससे क्या मुराद है. एक ही बात तो करनी है. I think respect is the other one. पाकिस्तान में होता है कि respect बड़ी की तरफ जाती है, यहाँ पे इज्जत छोटी की तरफ भी जाती है. And I think that's also a difference. And these are things I genuinely really value about the Western. You know, even बच्चों को you know वो autonomy देना कि आप खुद सोचो, आप अपना जहन इस्तेमाल करो. It's okay to ask questions. It's okay to say कि मुझे ये you know कि I do really want to do this, और माँ बाप उनसे बात कर सके. It opens up that you know discussion. उसी में respect भी आती है, बच्चे को भी इज्जत दो. ऊपर से feelings, बच्चों की भी फीलिंग्स होती हैं. आई फील कि पाकिस्तान में आप ज़्यादा इमोशंस और फीलिंग्स में नहीं जाते हो. यहाँ पे बड़ा सिखाया जाता है कि you know अगर बच्चा एंग्री टैंट्रम कर रहा है तो किस तरह से उस एंगर इमोशन को हैंडल करना चाहिए. पाकिस्तान में 2 चपेट लगाओ और वो सीधा हो जाए. you know like वो एक इज्जत और इमोशंस का ज़्यादा you know growing up, मुझे नहीं याद है कि किसी ने मुझसे पूछा हो you know are you feeling sad, what are you sad about, things like that you know. यहाँ पे अगर मेरा बेटा मुझे लगे कि थोड़ा सा सैड हो रहा है क्योंकि मैंने उसे नो बोला है, मैं उसके साथ बैठती हूँ, प्यार करती हूँ, बोलती हूँ तुम सैड हो रहे हो, किस बात पे सैड हो रहे हो, मम्मी ने नो बोला है, अच्छा मैं वापस से समझाती हूँ मैंने नो क्यों बोला है. you know this is an element I haven't seen growing up. I do have to preface this by saying I'm a therapist, तो मैं थोड़ा ज़्यादा शायद इन तरफ जा. I should that might be a difference between me and other Pakistanis here. ज़्यादा mutual respect, compromising, negotiations, emotions, feelings शायद. लेकिन I would say across the board अगर मेरी friends भी हैं वो भी कुछ मेरी तरह ही हैं, even though they're not therapists. These are the Western values they too include while raising their kids. ठीक हो गया, एक तो नेगोशिएशंस हो गई और एक रिस्पेक्ट हो गई, और इसके अलावा negotiations is ज़्यादा I would say like an open discussion. It's like a conversation, it's a flow of conversation. Yeah, it's okay. But yeah, I guess you could say negotiation, compromise, respect, and I would say हाँ ये भी एक difference आएगा. जैसे यहाँ पे या छोटी सी एज में I think थोड़ा सा और independence you know जैसे पाकिस्तान में I think बच्चे ज़्यादा dependent होते हैं माँ बाप पे, उनका रहना सहना कपड़े वपड़े, ऊपर से वहाँ पे if you are able to afford help की भी सहूलत होती है. you know यहाँ सब कुछ खुद करना होता है, chores, errands, कपड़े धोना, ये करना, बिस्तर बनाना, दुकान से जाके दूध खत्म हो गया खुद जाके लाना, you know things like that. So everything, so I think in that sense छोटी सी एज पे यहाँ पे independence भी शुरू हो जाती है. Parents are encouraged to make that. मेरे बेटे ने kindergarten शुरू किया है और टीचर्स मुझे बोल रही है कि इसको खुद से अपनी जैकेट पहननी सिखाओ, he should know by now. और मैं तक उसको जैकेट पहनाती हूँ, जूते पहनाती हूँ, and his teachers expect कि मैं अभी से उसको independent कर दूँ, और मुझे ये थोड़ा अजीब सा लगता है, but then
ये चीजें फिर यहाँ पे होती हैं कि you teach your kids to be more independent and self-reliant, less dependent on their parents, physically, emotionally, things like that. तो ज़ारा ये बात तो अच्छी है, ये तीनों बातें जो आपने शेयर की हैं। अगर हम आपके साथ, चूँकि आप वेल एजुकेटेड हैं, अगर हम इसकी उस पे जाएँ कि ये ग्राउंडेड कहाँ पे है? मतलब एक होता है ना, एक ब्रॉडर भी तो कोई ग्राउंड होगी ना सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट की। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ये इसी तरह से है जैसे आपको पता है। तो एक जो मेटा नैरेटिव हम कह लें, या पीछे कौन-सा बिग आइडिया कौन-सा है जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस हैं ओरिएंटेशन की और वैल्यूज? See, that's the interesting question because अभी यहाँ पे वैसे भी इतने changes आ रहे हैं। यहाँ के narrative, जैसे जब मैं भी यहाँ पे move हुई थी, अब जो narrative यहाँ पे और भी बदल गया है। I find जैसे now there's a lot about be who you are, आप जो भी हो, acceptance, be who you are, take ownership of that. जैसे 20 साल पहले homophobia was a lot more here, अब it's very accepted. 20 साल पहले हम भी हंसी मजाक में जैसे ऐसे वर्ड यूज कर लेते, oh you're so gay, this and that, ऐसा वर्ड तो हम सोच भी नहीं सकते अब ऐसा बोले, because even मुझे वर्ड ठीक नहीं लगता है कि इस तरह से नहीं किसी को बोलना चाहिए, so I think now there's a lot of messaging around just being who you are and whatever that is and taking ownership. So it's very, I think it's based on the individual. फोकस एक इंडिविजुअल, लाइक एक फैमिली पे नहीं आएगा, एक इंडिविजुअल पे आएगा, एंड उस इंडिविजुअल को जो बनना है, जो होना है, हम वो इनकरेज करें, हम वो ऊपर लाएं, और ये एक अच्छी बात है। आई फील लाइक दैट्स अ लॉट द नैरेटिव नाउ। और मैं कनाडा मूव हो गई हूँ, वहाँ यहाँ मैं आजकल अमेरिका आई नहीं हूँ, इसलिए मैं वहाँ बोल रही हूँ, लेकिन कनाडा भी it's even more. It's even more about be who you are, embrace who you are, accept who you are, beauty and differences. Like ये बहुत एक narrative कनाडा में चल रहा है और यूएस में भी अब आ रहा है बहुत। ठीक, सही। Okay, I think फिर families में भी फिर ये dynamic play होता है ना इसी तरह से। Then the focus is more on the individual as opposed to the family system. कि उस individual को क्या करना है, उस individual की wish और desire। आपने काफी इसको करीब कर दिया, और मुझे भी सोचने का मौका मिला है इस दौरान कि ये जो इंडिविजुअलिज्म पे फोकस है, शायद वो काफी मतलब एक बड़ी ट्रेडिशन है, उसकी वजह से ऐसा है। और एशियन सोसाइटीज में इंडिविजुअल पे फोकस नहीं होता, वो ग्रुप पे होता है, और वो मोस्टली फैमिली है, और बाकी सोसाइटी में भी ग्रुप्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं इंडिविजुअल की बजाय। your basically आपकी family unit is more important than the individual unit. यहाँ पे the individual unit is more important to the family unit, and the way I see it, both in extremes are not good. मेरे husband जैसे हैं, he's more traditional than I am. He also moved here at a later age, and he's more traditional, and about the family unit and this and that, which is great. Lekin in some ways, when he tries to completely make things about the family, and then I kind of have to remind him, lekin हमारे बच्चे भी individuals हैं. They might have some wishes and desires that don't exactly fit with the family, but then that's also okay. कुछ चीजें, it shouldn't just all be about what the family wants. It's also should be about what they want as an individual. एक हद तक, I think both should be एक हद तक. So I would hope कि मैं अपने बच्चों में दोनों individual का भी और family का भी ला सकूं। अच्छा ज़रा, कोई ऐसे मतलब ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपने कभी बच्चों के हवाले से कंसर्न फील किया हो कि यहाँ पे उनकी सोशलाइजेशन में ये चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती? कौन सी चीजें? कोई आप, मुझे तो नहीं पता कि मतलब कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मतलब एक कंसर्न आपको फील होता हो कि ये जो चीजें हैं जिसमें सोशलाइज बच्चे हो रहे हैं, ये शायद इतनी मुनासिब नहीं है, कोई ऐसी है यहाँ पे? Yeah, I would say for me, अगर मुझे डर लगता है तो वो जाता है on things where it's things like I think it would have to do with खौफ इसी बात पे आता है genders पे। तो सिंपल होता था ना, male and female are together,
मुझे थोड़ा सा मुझे खौफ आता है कि हाँ कुछ पता नहीं होता आजकल के बच्चों का किस तरफ जाएं. I would not. I think when I was younger I would have answered something like drugs and alcohol, but drugs and alcohol हर जगह हैं. I think आप ठीक पाकिस्तान में भी रहोगे आपको एक्सपोजर मिलेगा. अगर यहाँ पे कोई फर्क है वो कुछ ज्यादा ही इस तरफ का है कि ठीक स्पेशली कनाडा में ठीक बहुत आपको गे कपल्स नजर आएंगे. इट्स वेरी एक्सेप्टेड एंड वेरी नॉर्मल. तो बस अगर मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये चीज ज्यादा फर्क है पाकिस्तान से, कुछ ज्यादा ही एक्सेप्टेड एंड ओके है जो आई एम नॉट ओके विद इट. accept it if somebody else wants to do it but not okay with it for my kids. I think ठीक ठीक सबसे ज्यादा मुझे इस बात का डर लगता है कि कोई इस चीज का नहीं हो जाए. ड्रग्स और अल्कोहल तो आई फील लाइक हर जगह है, तो हर ठीक जगह आप किसी भी कंट्री में रह लो आपको एक्सेस मिल जाएगा. बिल्कुल ठीक I'd like to say one thing too, जो आप पहले पूछ रहे थे फैमिली स्ट्रक्चर का, मैं एक बहुत और चीज कहना भूल गई. The patriarchal society part. हाँ ठीक है That is not so much here at all. यहाँ पे काफी like equal husband and wives दोनों working. खैर यहाँ पे भी होता है. ठीक We are living in a patriarchal world in general. लेकिन यहाँ पे जितना male in the head of the household, जो बाप कहेंगे, बाप की इज्जत और बाप का खौफ, इतना it's kind of both here. It's like माँ बाप are sort of on the equal plane I find in the Western society in nowadays. Not back in like the 60s, 70s, but nowadays. That's another difference. Equality between the male and the female gender. गुड. अच्छा ज़ारा, इससे थोड़ा शिफ्ट करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं ज़रा सोसाइटी में. जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसमें अगर इसी तरह से आप कंपेयर करें, उसमें कौन सी वैल्यूज आपको बहुत ऑब्वियसली डिफरेंट नजर आती हैं सोशल लाइफ में पाकिस्तान की निस्बत? मैं काफी छोटी एज में मूव हुई थी, तो 11 साल की उम्र में मेरा मूव होना, मतलब मुझे ज्यादा सोशल का एक्सपोजर वहाँ पे था. 11 साल में तो आप कहाँ. लेकिन जो मुझे पता है, जैसे मेरी वहाँ कजिन्स हैं या फ्रेंड्स रहती हैं, आई हैव सम आइडिया ऑफ देयर सोशल लाइफ, आई कैन रिलेट टू दैट. पर यहाँ पे एक तो आई थिंक सबसे ज्यादा फर्क मुझे ये नजर आएगा कि वहाँ पे सब अपने ही लोग हैं, सब पाकिस्तानी हैं, तो जनरली स्पीक मतलब आपकी जिससे भी दोस्ती होगी एक और पाकिस्तानी से ही होगी, ठीक है. जितना भी कुछ अपने पेरेंट्स से झूठ वूट करके करो, इन जनरली एक वैल्यू सिस्टम तो एक ही है हर बच्चे की फैमिली का, ठीक है. यहाँ पे आप हर किस्म के यहाँ पे there's a lot of diversity. गोरे भी हैं और भी diversities हैं, different value systems everyone is raised with. तो मुझे बस ये होता है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से करूँ कि उनको घर के बाहर याद रहे कि उनके दोस्त जो भी हैं और उनकी जो भी वैल्यूज हैं, हमारी वैल्यूज ये हैं और हम ये इनको नहीं भूल सकते. तो अगर उनके माँ बाप are okay with them doing certain things, you have to understand we are not okay with certain things, and we want you to live life according to our values. But then the trick is, at the same time, I also want to encourage him कि बस थोड़ा सा अपना भी अपनी भी सोच के साथ वैल्यूज लाओ कि इस मोमेंट में ठीक बात क्या है. So I think that for me would be the biggest thing, is trying to figure out अलग-अलग values. But इस तरह से समझे कि just because दूसरा कर रहा है, it's not okay for me to do this. And then that tension that can sometimes arise between the parent and the child. ज़्यादा ये बिल्कुल सही है. ये कितना बड़ा चैलेंज है फॉर यू एज अ मदर, ये यही वाला कि जो Right now, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, but I grew up here too. मैं यहाँ छोटी सी एज में मूव हुई थी, तो it was a big struggle between me and my parents. और मैंने भी बहुत हरकतें और गलतियाँ की थी जो पाकिस्तान में तो मुझे मौका ही नहीं मिलता, माँ especially like लड़कियों के घर से ऐसे निकलना, देर तक रहना was question. यहाँ पे तो फिर भी आप पुश कर करके थोड़ी सी और गाड़ी चलाना शुरू कर देते हो आप. यहाँ पे लेट हैंग आउट, यहाँ पे वैसे मेरे लिए अकेले एक रोड पे निकलना is not as dangerous as वहाँ पे निकलना, so growing up there was a lot of tension between me and my parents because मुझे करना था और रहना था जिस तरह से मेरे फ्रेंड्स थे. मुझे कपड़े भी उनकी तरह पहनने थे, मुझे उनकी तरह so boys and girls hanging out, for example, might be acceptable for them and their parents, but it was not acceptable for my parents.
लेकिन मुझे और करना था बॉयज के साथ बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ द फ्रेंड ग्रुप. अब इसमें आई एम होपिंग कि मैं अपने बच्चों में डिफरेंट कर सकूं कि इट्स फाइन इफ यू वांट टू हैंग आउट विद बॉयज एंड गर्ल्स बट प्लीज डू नॉट फॉरगेट वेयर योर वैल्यूज आर एंड व्हाट्स ओके एंड नॉट्स ओके. लेकिन फॉर माय मदर इट वाज नो बॉयज बस. तो ये फर्क आएगा मेरी अम्मी में एंड मुझ में विद माय किड्स. अच्छा, ज़रा वर्क प्लेस का तो कंपैरिजन आपने काम पाकिस्तान में नहीं किया होगा ना? नहीं. तो वो चले हम खुद कर लेंगे, हमें पता है हम किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं. या आप यहाँ का जो है वर्क प्लेस एनवायरनमेंट उसको डिस्क्राइब कर देते थी, उसकी 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूज जो हैं वो अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें कि वो क्या है, मतलब व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एट वर्क प्लेस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज. Yeah, my husband and I discuss this a lot because he gets quite frustrated with certain things. Yeah. यहाँ पे या पाकिस्तान में? नहीं. No, I'm gonna confuse you if I say that. नहीं, लेकिन I guess no, he actually blends in with the Western culture in this. So sorry, मेरा comment आप ignore कर देना. That's gonna confuse you. Basically, I think professionalism is the number one thing. By professionalism, I mean यहाँ पे वक्त का बहुत होता है. चीजें मतलब टाइम पे होनी है, कहा है तो होनी है और होनी है. Like you know, एक I find पाकिस्तान में ठीक है मैंने वहाँ काम नहीं किया लेकिन मैं आती जाती बहुत. माय सिबलिंग्स आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, माय ब्रदर इन लॉज आर, तो थोड़ा सा उनका भी मैं देखती हूँ जैसे वर्क एथिक होता है. सो आई थिंक टाइम का जैसे यहाँ पे आप सुबह सुबह उठ के टाइम पे जाते हो, you know, like 8 बजे you're on your way, 9 बजे you've clocked into work and 4-5 o'clock you're clocking out. So that work-life balance, I think work-life balance is number one, I would say is different here. आप 9 बजे शुरू करो, 5 बजे खत्म करो, फिर घर जाओ अपने. That's it. वहाँ पे work-life balance in many professions, not in all. I think teaching professions are different, but in other professions I've noticed work-life balance नहीं है. मतलब आप रात के 9, 10, 11 बजे तक काम कर रहे होते हो and like you're getting no time with the family. You know, Saturdays को भी काम कर रहे होते हैं वहाँ पे लोग. यहाँ पे Saturday, Sunday is always off. You always get those 2 days off. फिर प्रोफेशनलिज्म का मतलब मेरा था लाइक टाइम के हिसाब से कि आप टाइम पे काम पे आओ और टाइम से जाओ. वहाँ पे पाकिस्तान पे आप नोटिस करते हैं स्पेशली एज यू गो ऑन द हायर पोजीशन, यू नो, लाइक 10-11 बजे आराम से सो के नाश्ता करके लोग काम पे जाते हैं. एंड आई एम लाइक वाओ, ये कैसे हो सकता है, यू नो, लाइक दैट्स सच अ डिफरेंस. यहाँ पे देयर इज नथिंग लाइक दैट. आप हायर अप हो, आप लोअर हो, जो भी आपको सुबह उठ के काम पे जाना है. द अदर थिंग आई हैव नोटिस्ड इज this might be just a general cultural thing, but लेकिन I think ये काम में भी आता है. There's like a हो जाएगा mentality in Pakistan, you know. यहाँ पे it's like नहीं हो जाएगा नहीं, clearly like कैसे होगा, कैसे करना है, ये deadline है और इसको यूं करके meet करना है. I could be wrong, maybe this in Pakistan. बिल्कुल ये बिल्कुल बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और बहुत मजे की है. मैं आजकल यही फेस कर रहा हूँ अपने एक प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स के साथ. हमारा ये जो आप बातें आपने की है ना, एक तो टाइम को हम इस तरह से बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, सीरियसली नहीं लेते. दूसरा ये है कि हम जनरल वेग टर्म्स में बात करते हैं. ये इसको हम बोलते हैं हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन. आपकी है लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन. बात है, टू दी पॉइंट है. ये हमारा कल्चरल डिफरेंस है. इसके फायदे भी हैं. मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका में, वो कहते हैं यार इसमें बड़ी वर्च्यू है इस स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन में कि आप किसी वक्त भी एग्जिट रूट ले सकते हो ना. निकलना है किसी कमिटमेंट से, निकल जाओगे आराम से. बात करो ना मजे की. तो ये तो हम करते हैं. अच्छा, मैं स्पेसिफिकली एक चीज कुछ आपने खुद ही मेंशन कर दी. अच्छा है आपकी यहाँ की इंफॉर्मेशन पे भी अपडेटेड है आप. क्या यहाँ पे ऐसे मुमकिन है कि ऑफिस टाइम के बाद आपको ऑफिस से ऑफिशियल ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल आ सकती है? आ सकती है, but the difference is you're not expected or obligated to answer or do it because आपके work hours खत्म हो गए हैं. There are people who choose to work overtime. हमारे एक friends हैं, husband and wife. वो लोग सारा वक्त काम कर रहे होते हैं, लाइक शाम में भी, वीकेंड्स को भी. they work from home, कोविड से पहले भी.
तो ठीक। but then they choose to work a lot, they choose to, वो उनके बच्चे नहीं हैं, वो relaxed schedules पे चलते हैं, सुबह भी काम कर रहे होते हैं, शाम में भी कर रहे होते हैं, weekends को भी कर रहे होते हैं, you know, they just are all over the place, but that's a choice they made. लेकिन जैसे मेरे husband है, if he gets a call, he clocks out at 4 p.m. If he gets a call at 4:30, he never picks up. Because he's not obligated to, he's not expected to. मेरे साथ बच्चों का वक्त है, ना बॉस मेरे ऊपर नाराज हो सकता है, ना एम्प्लॉय मेरे साथ कोई घबरा सकता है, ना मैं इस बात पे फायर हो सकता हूँ. This is not an issue because it's up to you. Now when you go into manager या director positions, फिर pressures कुछ और हैं. Then you are working overtime, then आपका काम बहुत है. But on average, the average person working here has work hours, you work within those hours, and then you're done. There's no obligation if you're the average working person here. मैनेजर डायरेक्टर पोजीशंस पे जाओ, वो तो फिर आप किसी भी दुनिया में किसी भी कल्चर में चले जाओ तो उनकी तो स्ट्रेसेस पे कुछ और ही होती है. फिर तो ठीक है, फिर तो यहाँ पे भी ठीक है, इसका मतलब है. I think, but then फिर क्या होता है, then I think there's something else, and that goes to work-life balance. Is there's boundaries here. यहाँ पे आई थिंक बाउंड्रीज भी होती है हर जगह ही, लेकिन प्रोफेशनल उसमें भी, कि जैसे पाकिस्तान में आई थिंक जैसे अगेन बिकॉज हायरार्की का बहुत होता है ना, जो आपसे नीचे होता है आप उसका थोड़ा सा फायदा भी उठा सकते हो, उसको ज्यादा काम भी दे सकते हो, लेट भी एक्सपेक्ट सकते हो, you know, things like that, and the one who's below you cannot really say much to the higher up. They have to do whatever the higher up is saying. यार बॉस ने बोला है करना पड़ेगा, you know. ऐसे ही है. यहाँ पे ये नहीं है कि आप हायर अप हो तो आप लोअर हो तो आपका कोई फायदा उठा सकता है, वो फिर बाउंड्रीज हैं. लाइक husband is off at 4 p.m. no one can make him now pick up the phone and call, even if it's his own boss, unless he chooses to. अच्छा ज़ारा, ये अगेन वो सवाल रिपीट हो रहा है, फैमिली कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने यही पूछा था. अब ये इन्होंने कैसे कर लिया, ये चीज़ों को, बाउंड्रीज को डिफाइन कर लिया, रोल्स को डिफाइन कर लिया. हम नहीं कर सके इस तरह से. मतलब डिजायरेबल तो है ना कि क्लियर हो चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है. तो क्या आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द डिफरेंस? आई थिंक दैट्स सर्टेन, देखिए हिस्टोरिकली भी तो फर्क आता है ना कंट्रीज में. लाइक आई मीन यूएस इज लाइक नोन एज द वर्ल्ड सुपर पावर. अब ऐसी थोड़ी सुपर पावर बन गए. एक हार्ड वर्क, एक एथिक, दिमाग लगा के गलत चीजें भी की हैं, ऑफ कोर्स, नॉट डिनाई दैट, लेकिन आप एक पावर पे आते हो तो एक तरीके से ये फर्क आपको अमेरिका और कनाडा में भी नजर आ जाएगा. दैट्स व्हाट आई मेंट टू से. माय हस्बैंड गेट्स फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज़ ही कंपेयर्स इट टू द अमेरिकन कल्चर. अमेरिकन मच मोर हार्ड वर्किंग देन कैनेडियंस आर. इंडियंस तो इसे ढीले होते हैं, एंड मेरे हस्बैंड को आदत है अमेरिकन्स के साथ काम करने की बिकॉज ही यूज्ड टू वर्क विद अमेरिकन कंपनीज, and now he's moved into Canadian companies, and he gets so frustrated कि ये मतलब he's very hardworking, he has those values, 9 to 4, लेकिन very hardworking. And Canadians तो इसे socialist government है ना, यहाँ पे it's different values. तो अब इतना हार्ड वर्क का नहीं आएगा यहाँ पे. बस काम ढीला ढाला कर लिया, पेचेक मिल गया, काम हो गया. Whereas my husband really takes pride in what he's doing. That's more the American way. You work hard, aggressive, you're alpha, you get the job done, and you know you become more powerful that way. तो ये सब करना है तो आपको work ethic के साथ करना है ना. आपको ये काम करना है, you have to show up to your work, you have to get it done, and you know that sort of hard working ethic, professionalism, reliability, timing, commitment, ये सब values I think हैं, तो इसीलिए ये सुपर पावर भी बनी हुई है ना ये कंट्री. अगर पाकिस्तान had a different start than it did, unfortunately, हम भी शायद कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे. But we had very different beginnings than the US did. अच्छा ज़ारा, ये बताइए कि जो मतलब हम बाहर निकलते हैं ना घर से, तो सबसे पहले तो ट्रैफिक है जो हमें जिसके थ्रू हम गुजरते भी हैं, जिसको देखते भी हैं. उसके बाद डिफरेंट जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट हैं. अब आप पाकिस्तान भी आते हैं और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ भी नज़र आती हैं, वहाँ भी नज़र आती हैं. इसमें क्या आपको डिफरेंट दिखाई देता है पाकिस्तान में और कनाडा में और अमेरिका में? ट्रैफिक वगैरह के हिसाब से
ट्रैफिक हो, लाइफ एट पब्लिक प्लेसेस जो Oh, भी। life in public हम्म, places. Okay. हम्म, Yeah, I think इंक्लूडिंग ट्रैफिक। I definitely think I mean मतलब जैसे ट्रैफिक वगैरह तो यहाँ पे भी होता है, but I have to say one, जैसे पाकिस्तान की गर्मी है, I think गर्मी से काफी फर्क पड़ता है लोगों के दिमागों में भी, you know, like आपका my husband like loses his mind if he gets a little too hot, you know, और वो actually मिडल ईस्ट में बड़े हुए हैं, he's from Dubai, तो एंड अब उनको कनेडियन मौसम की आदत होगी है, थोड़ा सा टेम्परेचर घर का गर्म होता है, हिज होल लाइक ही स्टार्ट्स टू बिकम दिस एंग्री पर्सन, सो वी जोक यू नो कि पाकिस्तान गर्मी होती है, कहाँ पे लोगों के पास पेशेंस और टॉलरेंस होगी, जाहिर सी बात है ट्रैफिक में लोग यू नो पे हॉन्किंग कर रहे होंगे, घर जाना चाह रहे होंगे, लाइट नहीं होती, एसी नहीं होता, इन पसीने गिर रहे होते हैं, यू नो, और फिर दूसरा बात है देन अगेन देयर इज यहाँ पे पब्लिकली अगेन देयर इज रूल्स एंड लॉज इन प्लेस, आप रूल्स और लॉज को ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आप जिसके भी जो भी हो, यू आर अ सिटीजन एंड यू आर the same as the person next to you, so you have to behave the same way as this person, just because you're so and so's son or you're wealthier than someone or you are pressed for time or जो भी आपके मसले मसाइल चल रहे हैं, doesn't matter, you are the same on the road as you are as this other person on the road, so I think यहाँ पे rules and laws हैं और वो implement किए जाते हैं, वहाँ पे होंगे rules and laws लेकिन implement नहीं होते और ना ही कोई follow करता है, ना ही कोई उनकी इज्जत करता है। ठीक है। अच्छा ज़ारा, तो लास्ट सेक्शन में हम ये देखते हैं कि स्टेट सिटीजन रिलेशनशिप जो है वो कैसे मुख्तलिफ है पाकिस्तान में, एक्सपेक्टेशन लेवल पे भी, कि मतलब यहाँ पे बतौर सिटीजन हम स्टेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और कैसे ओन करते हैं स्टेट को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ओन करते हैं, और वहां पे कैसे करते हैं, और स्टेट जो है उसका रिस्पॉन्स टूवर्ड सिटीजन क्या है, एक्सपेक्टेशन सिटीजन की क्या है, रिस्पॉन्स कैसा है? So I don't know if I'm the best person to answer all these questions, but I'll try my best because with socio-political stuff, I'm not very good with this stuff. अपनी दुनिया में रहती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ होश नहीं होता on a socio-political level. My husband would be, and you're welcome to interview my husband by the way. अगर हाँ, आपको बिल्कुल, डेफिनेटली। he's more aware of these sort of things, but also फर्क आता है कनाडा और अमेरिका में, because मैं दो जगह रह चुकी हूँ तो मुझे दोनों के फर्क है। Canada, because it's a socialist society, it expects it expects the government to take care of it, him or her. Expectation government से है कि government हमारा ख्याल रखेगी, you know, healthcare भी government system का है and things like that. तो इसमें ये फर्क आता है, अमेरिका में the individual has to take care of themselves more. गवर्नमेंट पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट आपका ख्याल रखेगी. So I think that's one of the main differences between Canada and America. Pakistan से I don't know about Pakistan's thing. And I think in that sense पे यहाँ के लोग ज़्यादा इसलिए भी फ़र्क आता है, यहाँ के लोग ज़्यादा struggle करते हैं अमेरिका में, because उनको अपने पाँव के बल किसी तरह से figure out करके खड़ा होना है, and therefore they have to be more hardworking. That's why Canadians are more relaxed and not as hardworking, क्योंकि उनको पता है कि government ख्याल रखेगी, कुछ भी हो जाएगा, वो they'll be fine. Which is why society में फर्क आता है, and that's why my husband gets frustrated working with Canadians versus Americans. And I think as opposed to what the state expects of the citizen is taxes, अपने taxes pay करो और laws को follow करो. ठीक है. Those are the two main things. You do right by the country. We've given you the citizenship. Honor that citizenship. You know, live according to the laws and the rules and regulations we've set. And we'll give you due process for things. And we will take care of you as well. But you take care of us as the country. Yeah. नहीं, हम तो टैक्स भी कोशिश करते हैं कि ना ही पे करें, और लॉज तो फॉलो टैक्स नहीं निकल सकते ना, यही बात है कि लॉज तो वहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं, तो यहाँ पे लॉ का खौफ है हमें. हम टैक्स को पे कर सकते, करते तो पे पकड़े जाते हैं हम. ज़रा लोग जो बिहेव करते हैं, मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ है यहाँ पे जो आप जैसे बात कर रही, क्या वो लॉ के खौफ की वजह से ही ऐसा करते हैं या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? I think one is that I think there's a difference, and again I don't think this is necessarily maybe पाकिस्तानियों की गलती, but I think यहाँ पे ज़्यादा एक खुद का एक conscience है. People, I feel like there's more of a conscience here.
due conscience कि you do right, you live right the life way, you हम्म do things the right way, you honor things the right way, and you know that the law is on your side, and then it's also that you have to follow it. I think Pakistan mein, I think there's a less consciousness of living life the right way, but then I blame a person living in a society that doesn't take care of that person. अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तानियों का ख्याल नहीं रखेगी तो पाकिस्तानियों को अपना ही ख्याल रखना है ना, फिर वो जिस तरह से भी ख्याल रखना है वो उसी तरह से रखेंगे, whether that's the right way or the wrong way, you know, whatever. Why would you feel like paying for taxes when your tax money is going to criminals? I understand that Pakistanis don't want to pay taxes. There's a lack of trust. There's this, you know, honor code of sort of trust. The country is doing right by us. We have to do right by the country. Now, this is not true on every level. हमारे यहाँ भी थे कि Trump तरह के लोग आते हैं. But there's a general sense of that. There's a general sense of trust. ठीक, बिल्कुल सही है, ठीक है बात. कि कुछ जस्टिस है, कुछ सही होगा और सही तरह से जिंदगी रहनी चाहिए. अच्छा, ये बड़ी ना मेरे लिए बड़ा इंट्रिगिंग क्वेश्चन है, ये जो वैल्यू और सोसाइटी का जो है ना, वो मतलब उसकी कह लें कि अडॉप्टेबिलिटी वैल्यूज की, कि आपकी जो स्टेटेड वैल्यूज हैं आप उनको प्रैक्टिस भी करते हो कि नहीं करते. अच्छा, मैं कोर्स भी पढ़ा रहा था रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पे, और उसमें मैं अक्सर स्टूडेंट से भी यही सवाल करता हूँ जो आपसे अभी पूछा. ये जो कॉन्शियसनेस है ना कि आई शुड डू द राइट थिंग, ये बिल्कुल आपने ठीक तज्जिया किया है कि उसके लेवल का डिफरेंस है, लेकिन ये स्टिल इंट्रिगिंग इसलिए रहता है कि ये सारी चीजें जो हमारे रिलीजियस क्लेम्स जो है ना, उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं. मतलब रिलीजियस क्लेम्स के मुताबिक तो ये कॉन्शियसनेस हमारी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए. राइट, या अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं. और मेरे लिए ये बहुत इंट्रिगिंग क्वेश्चन है कि अपरेंटली एक ऐसी सोसाइटी जो रिलीजन को इतना फ्रीक्वेंटली रेफर नहीं करती और जिसमें एथीइज्म की भी गुंजाइश मौजूद है जी, तो वो, लेकिन ओवरऑल एक सोसाइटल वैल्यूज के तौर पे वो हमें ज्यादा उसमें मतलब राइट थिंग की कॉन्शियसनेस जो है वो ज्यादा मजबूत नजर आती है एज कंपेयर टू अस प्रैक्टिसेस की बात जहां तक है. That's exactly what my husband says, that we are more living among Muslim values here. हाँ. When it comes to those, you know, time ki izzat and things like that, if those are all like values that our prophet would have preached. Exactly. Yeah. अच्छा, इवन काम खुद करना ये भी वैल्यू जो है, जो मतलब हम पढ़ते हैं किताबों में और बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो खुद काम करते थे, इसको प्रैक्टिस करते थे. अच्छा, लेकिन हम सिर्फ कहते हैं ना, ये बात करते नहीं है. वो वेस्ट जब करता है तो हम कहते हैं कि उन्होंने हमसे ले लिया ना, ये हमसे ले लिया मतलब ये कि जैसे हमें डिप्राइव कर दिया कि आपने नहीं करना, अब हम नहीं करना है. Right. हम इस तरह से इसको समझते हैं कि ठीक है, ये अच्छा काम आप करें, हम कहने वाला काम हम कर लेंगे. Right. ये कुछ इस तरह का लग रहा है. तो आपके जो हस्बैंड हैं उनसे भी डेफिनेटली हम चाहेंगे बात करना, तो उसका कोई मैकेनिज्म बता दें, उनका नंबर शेयर कर लें. मैं उनको बता दूंगी, मैं व्हाट्सएप उनका शेयर कर दूंगी. वो आजकल बहुत फारिग बैठे हुए क्योंकि मैं और बच्चे इधर आए हुए हैं, so he'll have plenty of time to speak with you. बहुत मजा आया. I really enjoyed your conversation. Thank you. तो हम चाहेंगे कि आपसे आइंदा भी हमारा राब्ता रहे. और yes, if there's any opportunities, I'd be happy to help. I'm a big advocate of mental health. I have my own practice. मैं आपके साथ website. I'd love to, if there's a channel through which I can dispel some myths and clarify mental health and the importance of it. I'd love to. अगर लोगों का दिमाग खुला हुआ हो to accept and receive and understand. लोग आते बंद दिमाग के साथ है तो that just feels like a waste of time, you know, chatting with them. जी, sorry, आप क्या कह रही थी? ज़ारा, अगर आप अपने ऊपर किताब लिखो तो उसका नाम क्या रखोगे? है ये कैसा सवाल है, तो मुश्किल सवाल है. अपने ऊपर as in like a Pakistani living here? अपनी मतलब जिंदगी पे. अपनी जिंदगी पे. Oh my gosh. कुछ journey के हिसाब से. Something to do with the journey. Because एक तो मेरी journey पाकिस्तान में शुरू हुई है, फिर अमेरिका में हुई,
अब कनाडा में है, तो हम्म, एक जैसे आई हर्ड समवन से कि जो इमिग्रेंट्स जो हम यहाँ पे आते हैं, हम एक मुसाफिर की तरह रहते हैं. I haven't felt that. I've always felt rooted to हम्म, where I'm living. ठीक, एक तो मैं छोटी एज पे आई थी, दूसरी बात है अल्हम्दुलिल्लाह I haven't experienced struggles. मैं एक we're taken care of financial stability, security वगैरह है. मैं बहुत अच्छे schools गई हूँ, अच्छी county में रहती हूँ, तो मैंने ज़्यादा struggles नहीं face किए हैं as an immigrant. हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह. हम्म, But yet I still feel like it's a journey of my life because I had a journey through Pakistan, then that journey developed differently in the States, and then a different journey in Canada. Or her journey may, you know, I have evolved as a person from a हम्म, child to a ठीक, youth to an adult to a wife to a mother. और फिर हम्म, हर जर्नी में मेरी वैल्यूज भी लाइक पाकिस्तान की जो वैल्यूज थी फिर इवॉल्व हुई अमेरिका आके, कनाडा आके और भी इवॉल्व हुई हैं. हम्म, Something to do with just my journey through life. Something हम्म. like that would be the title. ग्रेट ज़ारा, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करने का. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कन्वर्सेशन. Absolutely. I'd love to help speaking to anyone who has an open mind and wants to learn. ग्रेट, ग्रेट. I'd be happy to help. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Okay, अल्लाह जी. हाफिज. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.